Dear children, today I am going to explain ploidy of different parts of the plants. This is very important topic for the CBSE exam as well as competitive exam. So come and first try to know what is the meaning of the ploidy. In genetics, the number of chromosome occurring in the nucleus of a cell is called ploidy. Ploidy is a term referring to the number of set of the chromosomes in human being except their gametes. Most animals and many plants are diploid. We abbreviated it as diploid as 2N. Haploid organisms, cells have only one set of chromosome, abbreviated haploid as N. Ploidy in normal somatic body cells, the chromosome exists in pair termed as diploid 2N. During meiosis, the cell produces gametes on germ cell. Each contain half of the normal or somatic number of the chromosome. So ploidy is haploid. Now ploidy of anther, pollen mother cell and pollen grain. Anther ploidy is diploid, that is 2N. Why? Because of anther is bilobed structure, dithecous, 4 lobes that has sporogenous tissue that has potency to develop in pollen mother cell. So microspore mother cell or pollen mother cell ploidy is 2N and that undergoes meiotic division to form pollen grain. So ploidy of the pollen grain is always haploid, that is N. Now try to understand what happens with the pollen grain. Pollen grain again undergoes mitotic division to form vegetative cell and generative cell, but here ploidy is only haploid. And you also know that pollen grains set in 3 celled stage and 2 celled stage. Whether this is 3 celled stage or 2 celled stage, ploidy is only haploid, that is N. That is 3 celled stage means generative cell undergoes mitotic division and forms 2 cell. So that's why it is known as 3 celled stage, but ploidy is N, that is haploid. Ploidy of ovule except embryo sac, female gametophyte, all parts of the ovule is diploid. So this is very easy to remember for the ovule, that is nucellus, megaspore mother cell. All these things are diploid, that is ploidy is 2N. But female gametophyte, that is embryo sac, also is result of meiotic division. So the ploidy of female gametophyte or embryo sac is haploid N. Now ploidy of embryo sac. As you know, ovule undergoes meiotic division to form 4 megaspore mother cell in which 3 degenerates and only one functional megaspore mother cell, that is towards the micropylar end, undergoes 3 successive mitotic division. So megaspore ploidy is also N, that is haploid, and after mitotic division embryo sac is formed. Finally that is 7 cell and 8 nucleate stage. So ploidy of megaspore is N, embryo sac is N, synergids is N, antipodal cell is N, egg cell is also N, but remember that there are 2 polar nuclei present in the central cell. So the ploidy of the central cell is N plus N, that is 2N, diploid. So here again all parts of the embryo sac except central cell, their ploidy is haploid. Now this is the summary of the ploidy level in the plants. In sporophyte part of the plant, all cells are diploid like zygote, embryo, radicle, plumule, cotyledon, nucellus, microspore mother cell, megaspore mother cell, ovary wall, carpel, sepal, petal, stamen, leaf, fruit, stem. All are diploid, so ploidy is 2N. When you talk about the gametophyte, microspore pollen grain,
male gametophyte, megaspore, embryo sac, synergid, antipodal cell, egg cell, as well as two polar nuclei. That is separately, all are haploid, that is N. But when we talk about the two polar nuclei in the central cell, N plus N, that is 2N. So central cell ploidy is 2N. Endosperm is also haploid, and in the gymnospermic plant, that is because of that is formed before fertilization. So ploidy is here haploid. But in endosperm is diploid in angiospermic plant. Why? Because of it is the result of the double fertilization. I think now this is clear that how you have to remember ploidy of the different cells in the plant. फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि प्लॉइडी जीनेटिक्स में सेट ऑफ द क्रोमोसोम एक सेल में कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर वह पेयर में है तो डिप्लॉयड, और अगर सिंगल है तो हैप्लॉयड। ह्यूमन बीइंग में केवल गैमेट्स को छोड़ के या किसी भी ऑर्गेनिज की बात करें या किसी भी प्लांट्स की बात करें, वह डिप्लॉयड है, मतलब 2N है। इसी तरह एंथर हेल्प करता पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में, तो एंथर की प्लॉइडी 2N है, जबकि पॉलन ग्रेन का N है। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप बनता है। प्लॉइडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल में अगर आप देखिए तो सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉयड हैं, केवल एम्ब्रियो सैक को छोड़ के। वाई? क्योंकि एम्ब्रियो सैक रिजल्ट है मियोटिक डिवीजन का। माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोटिक डिवीजन होता है तो बनता है और वही एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। एम्ब्रियो सैक की अगर बात करें तो एक फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन बना के 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनाता है, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल हैं जो कि चलाजल एंड पे हैं, 2 सिनर्जीड्स और एक सेल माइक्रोपाइलर एंड पे 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में होते हैं। इसलिए प्लॉइडी पूरे पार्ट्स जो एम्ब्रियो सैक के हैं वो हैप्लॉयड है, एक्सेप्ट 2 पोलर न्यूक्लियाई को छोड़ के। दोनों पोलर न्यूक्लियाई कंबाइनली 2N है, मतलब सेंट्रल सेल की प्लॉइडी 2N है, डिप्लॉयड है। आफ्टर दैट एक और बात याद रखनी है आपको कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में एंडोस्पर्म हैप्लॉयड होता है, मतलब कि N होता है, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 3N होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनता है। मुझे शायद आप इस बात को समझ गए होंगे कि किस आधार पे प्लॉइडी डिसाइड किया जा सकता है और किस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।